Hello everybody. Since last few days we are discussing the general studies paper of UPSC Civil Services Preliminary Examination held in June 2022. Usually we discuss 5 questions in a day. Today I am going to discuss 5 more questions. So let us have a look at the first question of today. So what is there in the first question of today? The question is, with reference to software as a service, SaaS, consider the following statements. First, SaaS buyer can customize the user interface and can change data fields. SaaS users can access their data through their mobile devices. And Outlook, Hotmail, Yahoo Mail are forms of SaaS. Which of the statements given above are correct? So this question is basically related with the computer technology. Software as a service, SaaS. So as it has been mentioned in the last statement, you use Gmail, you use Yahoo Mail, you use Hotmail, Outlook, there is Microsoft 365 and Zoom is there, and similarly that Google Workspace is there. So all these softwares or all these applications are known as SaaS, software as a service. So इसमें क्या रहता है कि हम सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को परचेज करते हैं, हम सॉफ्टवेयर परचेज करके अपने हार्डवेयर के ऊपर उसको इंस्टॉल नहीं करते, हमें किसी किस्म का कोई सर्वर डिप्लॉय नहीं करना पड़ता, हमें किसी किस्म का कोई हार्डवेयर जो है वो स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें वो नहीं लगाना पड़ता. सो दैट इज़ वाई कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें सॉफ्टवेयर की, हम उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं और उस सर्विस को हम किसी भी डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं. सो ये सब इसकी फीचर्स हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज SaaS buyers can customize their user interface and can change data fields. Yes, it is true. SaaS users can access their data through their mobile devices. Yes, this is also true. Outlook, Hotmail, Yahoo Mail are forms of SaaS. These are the forms of SaaS. Yes, this is also true. So the answer to this question is D. All the given statements are correct. So let us discuss a little about this software as a service. So there are 3 main categories of cloud computing. So this is related with cloud computing first of all. Okay, there are 3 main categories. One is software as a service. Second, infrastructure as a service, that is IaaS. And platform as a service, that is PaaS. Software as a service is a software distribution model in which a cloud provider hosts applications and makes them available to end users over the internet. So इसमें क्या रहता है कि एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो वो एप्लीकेशंस को होस्ट करता है और वो एंड यूजर्स को इंटरनेट के थ्रू उनको प्रोवाइड करता है, वो सर्विस उनको डिलीवर करता है. द एप्लीकेशंस आर एक्सेसिबल टू एनी डिवाइस with a network connection. कोई भी डिवाइस, that can be tablet, that can be mobile phone, that can be your desktop, yet that can be your laptop. So कोई भी डिवाइस
जिस डिवाइस के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन है, सो उसी डिवाइस के ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। So SaaS applications are typically accessed via web browsers. Usually ये सर्विसेज हम वेब ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। So companies using SaaS applications are not tasked with the setup and maintenance of the software. So सेटअप कोई और करता है, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस कोई और करता है, अपडेटिंग उसकी कोई और करता है, हमें सिर्फ उसको यूज़ करना होता है। ओके, so users simply pay a subscription fee to gain access to the software, which is a ready-made solution. So जो यूज़र होता है उसने सिंपली सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी होती है उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, और यूज़र को ये सॉफ्टवेयर एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। SaaS एप्लीकेशंस आर कस्टमाइजेबल, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो। SaaS applications are customizable. Customers can rely on a SaaS provider to automatically perform updates. Automatically updates आते रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर की जो अपडेटिंग है वो ऑटोमेटिकली होती रहती है, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती परेशानी लेने की। सो कस्टमर्स कैन एक्सेस मोर और फ्यूअर सर्विसेज और फीचर्स ऑन डिमांड। तो कस्टमर्स हैं जो वो उस जो सर्विस की या उस सॉफ्टवेयर की सभी सर्विसेज को या फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या उनमें से कुछ फीचर्स या सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं एज पर देयर डिमांड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। Customers don't need to purchase software or additional hardware to support it. This has already been discussed. SAS challenges and risks. So SaaS जब हम यूज़ करेंगे तो उसके चैलेंजेस क्या रहेंगे, उसका रिस्क क्या रहेगा। नंबर 1, इश्यूज बियॉन्ड कस्टमर कंट्रोल, क्योंकि यूज़ हम कर रहे हैं, कंट्रोल उसका किसी और के पास है। सो जो भी कोई प्रॉब्लम अकर होगी, जो भी कोई इशू अराइज होगा, तो वो क्लाइंट के कंट्रोल में नहीं होता, तो वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके कंट्रोल में रहता है। कस्टमर्स लूज कंट्रोल ओवर वर्सनिंग, जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है तो वो सभी के सभी क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सो क्लाइंट के पास कस्टमर के साथ ऐसी कोई ऑप्शन नहीं रहती कि अगर वो पहले वाला जो सॉफ्टवेयर है उन फीचर्स को यूज़ करना चाहता हो, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहता हो, अपडेटेड वर्जन को यूज़ नहीं करना चाहता हो, in that case the customer would not be having any option, not be having any choice. Okay, so difficulty switching vendor, जैसे अभी मान लीजिए मेरा जीमेल के ऊपर अकाउंट है, तो अगर मैं कल को जीमेल से मैं स्विच करना चाहूँगा हॉटमेल पे, तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जीमेल के ऊपर मेरी इतनी मेल्स, इतना डेटा, सब कुछ होगा। सो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्विच फ्रॉम Gmail to Hotmail. Then security. Security is another concern because my entire information is lying with the that cloud service provider. So this is about the SaaS examples: Google Workspace apps, Microsoft 365, Netflix, Zoom, Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, etc. These are the various examples of this. So let us have a look at the question once more. तो कौन सी स्टेटमेंट्स SaaS के बारे में ट्रू है। पहला, बायर कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड चेंज डेटा फील्ड्स, हमने ये स्टडी कर लिया है कि कस्टमाइजेशन पॉसिबल है इसकी। यूज़र्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस, यस, एनी डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट अवेलेबिलिटी है आप वहाँ एक्सेस कर सकते हो। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ SaaS, ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया behind the fractional orbit bombardment system often talked about in media. मीडिया में
अक्सर एक फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम की बात होती रहती है। तो वो क्या है या कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है? एक्चुअल में इसका आंसर है सी। हम अभी देखेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। ए मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड deorbits over a target on the earth. सो पहले जो कोई भी वारहेड है या मिसाइल है जो वो ग्राउंड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगी। ओके, सो एटमॉस्फेयर से बाहर जा कर के ये यू कैन से ऑर्बिट करेगी अराउंड द अर्थ। ओके, सो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करके फिर ये यू कैन से डी ऑर्बिट करेगी ओवर ए टारगेट ऑन द अर्थ। तो फिर ये स्ट्राइक करेगी अर्थ के ऊपर किसी टारगेट को। सो ये सिस्टम रहता है। हम इसको थोड़ा देखते हैं। फंक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम, FOBS. In FOBS, a warhead is put into a stable orbit of the earth and it deorbits over the target. The same statement is there, which is mentioned there. The warhead can remain in orbit for days or months, so that when the weapon deorbits and attacks its target or simply explodes in orbit, an EMP, electromagnetic pulse, is generated which initiates an attack. So this is the way how does it work. Okay, so next is which of the following is the context in which the term qubit is mentioned. Okay, so देखिए एक हम जो हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है, क्लासिकल कंप्यूटिंग में जो बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज बिट which comprise of two digit that is 0 and 1. Okay? And in C यहाँ क्या लिखा है? Qubit. Qubit means Q plus bit. Okay? So Q is related with the quantum computing. QU. Okay? So bit means the basic unit of information. So it means qubit is a basic unit of information in quantum computing. So that is basically there. Okay, basic unit of information in quantum computing. So this is important to remember here. Basic unit of information in quantum computing. So this is important to bear this in mind. So let me write here. This is a basic unit of information in quantum computing. So this is about the qubit. So next question is consider the following communication technologies: closed circuit television CCTV, radio frequency identification, wireless local area network. Which of the above are considered short range devices or technologies? So पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। सो आंसर में ये है कि CCTV, RFID and WLAN. So all the three are related with the short range devices or short range technology. So the answer here is D. Okay, D is the answer. So let us have a look at the short range devices. So short range devices are radio devices that offer a low risk of interference with other radio services. Okay, so short range डिवाइसेस की ये खासियत होती है, ये भी रेडियो डिवाइसेस हैं, इनकी ये खासियत होती है कि ये अदर रेडियो सर्विसेज के साथ इंटरफियर कम करते हैं. सो रिस्क ऑफ इंटरफियरेंस विद अदर रेडियो सर्विसेज इन केस ऑफ short range devices remains very low, usually because their transmitted power
एंड हेंस देयर रेंज इज लो, क्योंकि उनकी जो ट्रांसमिटेड पावर होती है वो भी लो रहती है और उनकी रेंज भी लो रहती है। द डेफिनेशन शॉर्ट रेंज डिवाइस में बी अप्लाइड टू मैनी टाइप्स ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट सच एज, ये जो शॉर्ट रेंज डिवाइस की डेफिनेशन है इसको हम बहुत सारे वायरलेस इक्विपमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल है, सीसीटीवी है, आरएफआईडी है, लोकल एरिया नेटवर्क है, रिमोट कंट्रोल है एंड ऑल। सो ये हो गया आपका शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में। सो क्वेश्चन में क्या लिखा था देखो, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, ये भी हमने एग्जांपल में देखा है, आरएफआईडी देखा है, लैन देखा है एग्जांपल में। सो आंसर बिकम्स डी इन दिस केस। ओके, so next is consider the following statements. Biofilms can form on medical implants and human tissues. Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Which of the statements given above are correct? So यहाँ क्वेश्चन मेनली बायोफिल्म्स के ऊपर फोकस्ड है। सो बायो plus film. So it is a combination of the two words bio plus film. So bio means film. Film means a you can say thin layer created by the biological elements, means microorganisms. Okay? So it can be created on various surfaces, various minerals, metals, okay, even you can say medical devices also, on medical devices also, and so, okay. So biofilms can form on medical implants with human tissues. Yes, this is true. मेडिकल इम्प्लांट्स के ऊपर भी हो सकती है, ह्यूमन टिश्यूज के ऊपर भी बायोफिल्म क्रिएट हो सकती है, मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर भी हो सकती है। Biofilms can form on food and food processing surfaces. Yes, this is true. We are going to discuss in the next slide. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. This is also true. So as far as the answer is concerned, all the four statements are correct. So the answer becomes D. 1, 2 and 3 are correct. Okay. So what are biofilms? Okay. So biofilms are a collective of one or more types of microorganisms that can grow on many different surfaces. So microorganisms की एक लेयर होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस के ऊपर ग्रो कर सकती है। Microorganisms that form biofilms include bacteria, fungi and protisters. Protisters are usually unicellular organisms. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं ओके जो बायोफिल्म बनाते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हो सकते हैं, वो प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। बायोफिल्म्स आर फाउंड ग्रोइंग ऑन मिनरल्स एंड मेटल्स, मिनरल्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर ग्रो कर जाती है। दे आर found underwater, underground or above the ground. They can grow on plant and animal tissues. So plant tissues के ऊपर, animal tissues के ऊपर grow हो सकते हैं, and implanted medical devices such as pacemaker and catheters etc. So in implanted medical devices के ऊपर भी ये grow कर सकती है जो biofilm होती है। So हमारे यहाँ क्या लिखा था, can form on medical implants with human tissues. It can grow on human tissues. Can form on food and food processing surfaces. On many surfaces we can say, right? So plaque, Plaque, plaque. Plaque is an example of a biofilm जो हमारे दांतों के ऊपर जो एक लेयर बन जाती है। Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Yes, so all the three statements are correct. So ये हमारे आज के 5 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। सो इन क्वेश्चंस को लेकर अब अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर
or address all your queries and doubts. Okay? So आज के लिए इतना ही था. Bye for today. Stay healthy, stay happy. May God bless you all, and thank you very much.